Hello dear students, how are you? I hope you all are fit, fine and fabulous. Welcome again in this new video. आजकल आप लोग खूब मस्ती कर रहे होंगे, है ना? किड्स, अब आप ये बताइए कि जब आपको कहीं जाना होता है, जैसे आप एक रूम से दूसरे रूम तक, तो आप क्या करते हैं? सिंपल, आप वॉक करते हैं, है ना? और अपनी टीथ को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं? आप अपने टीथ को ब्रश करते हैं। मैंने सही कहा ना? सो वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क लाइक टू रीड, टू स्टैंड, टू थ्रो, टू वॉक, टू फाइट विथ अवर ब्रदर और सिस्टर, समटाइम्स अवर फ्रेंड्स, और कैच करते हैं, सिंग करते हैं, क्लीन करते हैं। आपकी मदर कुकिंग करती है, कटिंग करते हैं, आपके पेरेंट्स कुछ कट करना होता है, और आप होमवर्क करते हैं। और जो मिस्त्री या फिर मौसम होते हैं, दे रिपेयर्स और प्ले भी करते हैं, जस्ट लाइक फ्लाइंग काइट और फ्लावर्स पिक करना, राइट करना। दीज ऑल आर कॉल्ड वर्क। ये सारे वर्क आप करते हैं ना, और आपके फैमिली मेंबर भी करते हैं। सो किड्स, जो हम सारे वर्क करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्शन वर्ड और वर्ब। जितने भी वर्क हम करते हैं, सारे वर्क जो है वो एक्शन वर्ब कहे जाते हैं। टुडे वी लर्न अबाउट द एक्शन वर्ड. I will tell you action words that tells what we are doing. Verb. A verb is a word that shows action. Look at the picture, just like a jumping girl. The baby sleeps. A man eats a burger. So jumping, sleeps and eats are called verb because they are doing action. So here is a poem. ये poem तो आप सबको आती होगी, तो एक बार चलिए रिसाइट करते हैं and understand it. So let's start. Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Run a little, skip a little, tap one knee. Bend a little, stretch a little, nod your head. Yawn a little, sleep a little in your bed. Are you enjoying this poem? So let's recite once more. Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Run a little, skip a little, tap one knee. Bend a little, stretch a little, nod your head. Yawn a little, sleep a little in your bed. So students, आप लोगों ने पोएम तो एंजॉय किया, इसमें ढेर सारे एक्शन किए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं, जस्ट लाइक होप, jump, run, skip, tap, bend, stretch, nod, yawn and sleep. These all words are called action words. So what are action words? The answer is a word which tells us what a person, an animal or a thing does or will do is a doing word. Doing word or action word are called verb. Now come to the comprehension question और check कि आपको कितना समझ में आया. Look at the picture and circle the action word. Here, look at the picture number 1 and option is wake up, take a bath, study. Next picture, tidy up, play, brush teeth. Next picture is which is do homework, play or listen music. Here next is prayer, read a book, draw a picture. Next picture, eat breakfast, take a bath, listen to music. Now last picture is read a book, draw a picture, play. And here's the answer. Number 1, take a bath. Next is brush teeth. Next is do homework.
Number 4, draw picture. Number 5, listen music. And 6, read books. Now it's practice time. Put out your notebook and start writing. Look at the picture and write the correct option. Students, look at the picture. What are the children doing? क्या करना है ये? Jump or eat. You have to take the correct answer. Next picture. Yes, here what are they doing? Mother and girl. Yes, take the correct answer. Dance or cook. Next picture. Here, what are the children doing? They read or play. You have to take the correct answer. Next picture. Look at the picture. What are they doing? Walk or bath. Next, what did the child do? He sleep or drink. That's it today. Have fun. Take care. Thank you.